Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is how to apply a best base possible with minimum products. Now here I'm using my Pond's moisturizer. I really love this moisturizer. It moisturizes your skin, makes it hydrated. Now why you need moisturizer before is because makeup can dry out your skin, so we do not need that. That's why I'm nicely applying the moisturizer on my face, eyelids, now the neck. Now the second part is also there as a primer, but here we are skipping because it's more of a basic makeup. Now here I'm using my Lakme Invisible Finish foundation. It has SPF 8, which is good for like everyday use, office use and more. So yeah, now I'm using no brush, no sponge, just my hands. So same with my fingers. Now I'm applying it all over my face, yeah, even the neck area. Now again with my fingers I'm dabbing the foundation in my skin nicely, very light handedly. Before I used to rub sometimes, but now I have realized that dabbing, more dabbing, light dabbing makes the makeup last longer, and the look, the finish is amazing. Not forgetting the eyelids, very light handedly on the eyelids. Now here I thought that I do need concealer because of my eyes, under eye. So here I'm using my Fit Me concealer. It's in the shade light, and everything I'll try and link in the description box, so do check that out. So now I'm putting it on the bridge of my nose, on the side of the lips, on my hair, forehead for some highlight. Now again dabbing it into my skin very slowly. ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आप वो टेंशन मत लेना, बट आपको बहुत स्लोली करना है। और यस, आपको ट्राई करना है कि आप उसको अच्छी से ब्लेंड करें, एंड जस्ट नॉट रबिंग इट ऑफ. सो ब्लेंडिंग या. सो हियर आई कंप्लीट द लुक. सी, थोड़े से कंसीलर यूज़ करने से आपके फेस पे, आपके लुक पे बहुत फ़र्क पड़ता है. नाउ फॉर माई आईज, आई ऑलवेज लव माई Maybelline काजल. तो यूजिंग माई काजल, I'm using it on the waterline. And one more thing I'm going to do is, I'll show you. मैं eyeliner जैसे नहीं लगा रही हूँ. I'm just going to हल्का सा unevenly थोड़ा लगाया. And with my ring finger I am smudging it very lightly. वो आपको लग रहा है because it is fast, but it's very lightly. So वो it gives you a very little, very light smoky look, which I love, and I do it most of the time. I also do it with my blue kajal, green kajal. It looks very good, guys. Now I really love this look because that red and that is looking very good. Now I'm using my, again, Maybelline's lipstick. It's in the shade of red, and I was very much into bright colors that day, so but this really turned out very good. Now I'm applying the lipstick, and you can actually do according to you. Now the lipstick is very dark, तो sometimes we even stain, वो नीचे थोड़ा smudge हो जाता है, तो उसके लिए मैंने कंसीलर से थोड़ा सा वो लाइन बना के कंसील किया है. अब इसे आपको क्या करना है, बहुत ही पेशेंस से डैप करके इसे ब्लेंड करना है, ताकि वो एक परफेक्ट लाइन क्रिएट हो और जो एक्सेस जो दिख रहा था वो भी ना दिखे. इट गिव्स यू क्लियर लुक एंड इट गिव्स अ वेरी गुड शेप टू योर लिप्स. सो या, दिस इज़ वॉट आई डू समटाइम्स, एंड आई वॉन्टेड टू शो. ऑल्दो ऊपर की तरफ थोड़ा रह गया था, विच आई क्लियर लेटर ऑन. अभी ब्लश रह गया, तो आई थॉट लेट्स यूज़ द लिपस्टिक इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग मोर प्रोडक्ट्स. तो वही सेम लिपस्टिक से मैंने ब्लश लगाया. ओके, बहुत ही लाइट, क्योंकि ये बहुत ही पिगमेंटेड है और रेड कलर है, तो आपको बहुत थोड़ा सा लगाना है. एंड येस, इट लुक्स वेरी नाइस. ये तो ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया था. उस दिन गुरु नानक जयंती थी, उस दिन मैंने ये लुक किया. हम गुरुद्वारे भी जाने वाले थे, ऑल्दो आई चेंज माई लिपस्टिक लेटर ऑन, बट दिस वॉज माई लुक. हैप्पी गुरु नानक जयंती. आई वॉज विशिंग यू ऑल, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो.